آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے ہیں، ڈیم فنڈ بنانے کی، عدالتی اوور سٹیپنگ کی، جوڈیشل ایکٹیوزم ایک مسئلہ ہے پاکستان میں، چاہے وہ سٹیل مل کا معاملہ ہو، ریکوٹک کا معاملہ ہو، سیاستدانوں کو نااہل کیے جانے کا معاملہ ہو۔ آپ سے سوال یہ کہ یہ معاملات آئینی عدالتوں یا آئینی عدالت کے قیام سے کیسے حل ہوں گے؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے آپ کو کہ آئینی عدالت کے ججز 63A جیسے متنازع فیصلے نہیں دیں گے، اس سے یہ سلسلہ رک جائے گا؟ تھینک یو۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں اگر کوئی ایسا کامن لاء کا ایگزامپل مجھے ملتا ہے تو ساؤتھ افریقہ کا ایگزامپل ملتا ہے، جہاں انہوں نے ہمارے جیسے قانون ہوتے ہوئے پھر بھی ایک الگ آئینی عدالت قائم کیا۔ اور ایک جو ہمارا ان کے ساتھ ایشوز ملتے جلتے ہیں وہ یہ کہ وہاں بھی مختلف ڈیموگرافکس کا بائیفیکیشن ہوتا ہے، اور ایک آئینی عدالت ان سارے ڈفرینسز کے باوجود ایک کنسنسس بنا سکتے ہیں۔ جو دوسرا بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم نہ صرف ایک آئینی عدالت، میں نے آج کی بھی PLF کی تقریر میں یہ کہا کہ صرف ایک آئینی عدالت یا آئینی بینچ بنانے سے تمام مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی حل کرنا ہے۔ ایک ان کو ایک خاص عدالت اس لیے دینا ہے تاکہ وہ بالکل اپنا فوکس ادھر رکھیں، تمام آئین کے سوال کے حوالے سے جواب دے، جو بھی پولیٹیکل کیسز ہے، کانسٹیٹیوشنل کیسز ہے وہ دے کے، فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز ہے وہ دے کے، اور ساتھ ساتھ جو میجورٹی آف کیسز ہے جس کا کام ہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کو وہ دیکھنا، وہ بھی دیکھے۔ لیکن اگر آپ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس کو چینج کرتے ہیں جس میں آپ جو موجودہ طریقہ کار ہے کہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہے وہ اس کی بیسکلی انہوں نے ڈیفنکٹ کر دیا پروسیس کہ وہ اپنا مرضی کا ججز اپنی مرضی کے طریقے سے تعین کرتے ہیں۔ So what we have resulted is from the Iftikhar Chaudhry court a perpetualization of this concept of super judicial activism that is not found anywhere else in the world. The only counter to that is for us to have a proper appointment for the process of judges that is not one that is just and exclusively left in the domain of the higher judiciary that protects the concentration of powers in the hand of any one individual, but actually a consensus decision of a forum that, sure, it can include members of the judiciary, but must also include members of the opposition and the government, must also include members of the bar, اور ان سب کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ نام تجویز کرے، اس نام پہ ڈیبیٹ کرے، اور جو کنسنسس بنے وہ کنسنسس کے بعد وہ جج بنے۔ وہ آپ کو ایک ایسا موقع دے گا جو کہ تمام پارلیمنٹس کے پاس اختیار ہے، مگر آپ کا بیچارہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ججز کا پورا جورسپروڈنس ہے اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے آئینی کورٹ پہ بٹھانے سے پہلے۔ اور جو ہمارا سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، کبھی کوئی کمرشل جج کا پریکٹس ہوتا ہے، کب کوئی کرمنل کا، بڑی ریئرلی کوئی وہ کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ ہر ایشو پہ۔ تو if we can bifurcate the two, then there'll be a specific focus on the constitutional and the political issues, and we can also simultaneously with the other court address the pendency of cases and the long log jam of issues that is a result of the fact that the judges spend more time on political cases than they do on the cases of the public. تو ملال صاحب، اگر آپ ججز کی تقرری کے طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں، امریکہ کی مثال دی جا چکی ہے، تو وہاں تو تعیناتی کا عمل پھر صرف جج صاحبان کے لیے نہیں ہے، وہاں تو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے بھی ہے، وہاں تو ایمبیسیڈرز کے لیے بھی ہے، آرمی چیف کے لیے بھی ہے، وہ کانگریشنل کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے بغیر ان کی منظوری کے بغیر نہیں تعینات ہو سکتے، تو پاکستان میں صرف ججز یا چیف جسٹس کے لیے کیوں؟ نہیں، بل ایک تو ججز اور چیف جسٹس نہیں کرتے اس وقت ایسے نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ آپ یا ان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہو یا ان کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو تو اس پہ آپ جج بنیں گے، ورنہ نہیں بن سکتے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ امریکہ کے نظام میں ہر فیڈرل اپوائنٹمنٹ کے لیے اس قسم کا گرلنگ ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں عدالت کے ساتھ، وہاں جو جوڈیشری کے اپوائنٹمنٹس ہیں
Actually जो People's Party का proposal है, जो अपना pure People's Party का proposal है, that takes us back to the 18th Amendment, and the 18th Amendment gave Parliament the choice, Parliament the veto, and the suggestions would come from the judiciary. जो compromise बनता जा रहा है वो ये कि हम दोनों Parliament और Judiciary Committee को मिला के मिलके फैसला करें, चले consensus की तरफ. I don't mind that. But the power that they have in Parliament, they don't, in America, या in Britain, या anywhere else, they don't ask the judiciary. They don't ask them about the laws they're making. They don't ask them about the judges they're appointing. पार्लियामान खुद बैठता है उनका बिल्कुल प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन पे, कोई और नहीं करता, कोई जज नहीं करता. प्रेसिडेंट फैसला करता है कि मैंने फला बंदा को जज बनाना है, और वो फला बंदा फिर पार्लियामेंट का कमेटी के सामने पेश होता है. और जिस तरीके से वो इंटरव्यू उसका करता है, मैं आपको बताऊं, शाहजेब खानज़ादा साहब भी बैठा होता, वो इस किस्म का इंटरव्यू किसी गेस्ट के साथ नहीं करते. जो अमेरिकन के सियासतदान के सेनेटर्स उनके मुस्तकबिल के जजेस से करते हैं. आप अपनी बात जारी रखिएगा. सवाल यही तो हो रहा है कि वहाँ सिर्फ जजेस से नहीं होता कमेटी में इंटरव्यू, तो फिर और ओहदों के लिए भी लोगों से होता है. चले वो दूसरे ओहदों के लिए भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर जो इस वक्त बहस हो रहा है वो अदालत के हवाले से है और अदालत की अपॉइंटमेंट के हवाले से है. तो जो मैं एग्जाम्पल वहाँ के दे रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवन द कॉम्प्रोमाइज सजेशन दैट वी आर गिविंग, where we're allowing for the judges to have a role in the appointment, still in our compromised judicial reform, that is not something that's there. There it's completely an executive domain. They nominate, and then it's completely the legislature's domain, the Senate's domain, that they confirm, and then that person becomes a judge of the Supreme Court. वहाँ ना आज़ादी अदलिया का आज़ादी का सवाल इस पे उठता है, ना सियासतदानों को पता कुछ नहीं है कानून का, वो किसको बता, कोई नहीं पूछता. वो कहते हैं इनके पास मैंडेट है, वो मुंतखब है. आप इस किस्म का प्रोसेस चाहते हो ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट्स के लिए, हम कर सकते हैं. आप इस किस्म के प्रोसेस चाहते हो फौज में जो तैनाती होते हैं, यार wouldn't be for फौज because it's not actually the brigadiers and the generals जिसको अप्रूव होना पड़ता है, उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को और इस किस्म के ओहदेदार को सेनेट कंफर्म करते हैं. तो वो आप लेकर आ सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूं कि जब तक यही होगा कि आप विद इन द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी फैसले करेंगे, तो वो कोर्ट्स भी ऐसे चलेंगे. और यही वजह है कि इनका पूरा फोकस इस पे रहा है. इनका कोई दिलचस्पी इस पे नहीं रहता कि अवाम को इंसाफ देना है, हमने मसाइल का हल निकालना है. वहाँ भी एक किस्म का जुडिशल सियासत शुरू हुआ है, एंड अगर उसको आपने रोकना है तो यू हैव टू. एंड आई एम नॉट, मेरा ये ना ये मेरा नक्शा है, ना मैंने ये सोच के, पर ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये ना सिर्फ कंसेंसस दोनों जमातों के हद तक, मगर तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग JUI, इंक्लूडिंग PTI, endorsed the Charter of Democracy. Every single year, even in 2023, August 2023, civil society, आप इसी इस्लामाबाद में बैठ के इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 का नाम दिया, उसमें पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, PTI के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, लॉयर्स कम्युनिटी के नुमाइंदे, और उन्होंने पूरा चार्टर, जैसे आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, फ्रीडम ऑफ अदर थिंग्स पे, लेकिन जो पहला डिमांड था वो ये कि आईनी अदालत बनाए. इसलिए आज से नहीं, ये काफ़ी एक पुराना मुतालबा है. और अगर हम समझते हैं कि सियासी तौर पे आज मुमकिन है कि ये हम करें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे. तो बिलावल साहब, फिर टाइमिंग के अलावा ये भी है कि क्या ये पर्सन स्पेसिफिक मामला है किसी हद तक? इमरान खान साहब तो मुसलसल ये तनकीद कर रहे हैं कि सब जल्दबाजी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए हो रही है. आप लोग चाहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तौसी मिले, चूँकि उस मौक़िफ़ को इसलिए तक़वियत ज़रूर मिल रही है कि आप ऐन उस मौके पर कर रहे हैं जब 25 अक्टूबर में बहुत कम वक्त रह गया है और काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट की डेट है. तो ये पर्सन स्पेसिफिक है. मैं समझता हूँ कि ये तो ज़रूर PTI का कोशिश रहा है. PTI का कोशिश शुरू दिन से ये रहा है कि हर ओहदा को मुतनाज़ा बनाया जाए, पार्टिजान बनाया जाए. और ये हमला जस्टिस फ़ायज़ ईसा पे आज से शुरू नहीं हुआ, ये हमला शुरू हुआ PTI के दौर से. जहाँ तक इस आइन साजी और कानून साजी के हवाले से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना आज ना कल, ना मेरा ओरिजिनल ड्राफ्ट, ना मेरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ना मेरा मंशूर, ना मेरा आज
the legislation draft is person specific as far as Justice Faiz Issa is concerned. If you want to ask why is Maulana Fazlur Rahman, why is PTI, why is Noon League voting, not voting, वो तो इनका अपना context होगा. मैं आपको बता सकता हूँ कि हम किसी person specific legislation ना चाहते हैं, ना कभी भी चाहते हैं. मगर मैं Justice Faiz Issa के बारे में इतना तो कहूँगा कि he is the first Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan that has been even willing to consider diluting the powers of the Chief Justice of Pakistan. ये पहले सियासत के मैदान में सदर ज़रदारी में प्रेसिडेंसी के साथ किया था कि तमाम प्रेसिडेंसी का पावर्स जो मुशर्रफ ने उस ओहदे में इकट्ठा किया, उसने वो पावर्स पार्लियामान को और प्राइम मिनिस्टर को डिवॉल्व किया. और ये पहला चीफ जस्टिस है, जस्टिस फाइज ईसा, जिसने पार्लियामान का एहतराम करते हुए अगर उसके पावर्स पे कोई कतकन लगे या ना लगे, उसने उस कॉन्सेप्ट के साथ दिया. तो ऑब्वियसली कि एक अच्छा उम्मीद है कि आगे जाके भी ऐसा ही रहेगा. हम सियासी तौर पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम ये लेजिस्लेशन जैसे ही हमें 2/3 अक्सरियत मिले, वो कल हो, परसों हो या आगे जाके हो, हम इसको लेकर आए और आइन साजी करके मुकम्मल करें. मैं आपसे ज़रूर ये सवाल करूँगा कि ये जो जल्दबाजी और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, शायद उनका उम्मीद ये हो कि जिस तरीके से माजी में भी जुडिशल रिफॉर्म्स को सैबोटेज किया गया by a coordination between the bar and the bench and political parties, शायद वो समझ रहे हैं कि इस तरीके से वो हमारा आइन साजी को आगे जाके सैबोटेज कर सकेंगे. मैं समझता हूँ कि अगर हम 2/3 अक्सरियत प्रोड्यूस करते हैं और हम ये आइन पास करते हैं, तो हमने भी बहैसियत सियासतदान माजी से सबक सीखे हैं. And we should not repeat the mistakes we made when we went from the 18th Amendment to the 19th Amendment.